Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 102 as I'll be continuing with the exercise of Unit 23, Punctuation. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 102 as I'll be continuing with the exercise of Unit 23, Punctuations. Students, in my last video I had started with this Unit 23, Punctuation, and punctuation is the use of different marks like comma, full stop, question mark, exclamation mark, etc. to make the meaning of a sentence clear. Fine? Now, the wrong use of a punctuation mark can be very confusing, and punctuation brings clarity to our thoughts. Now, I had explained the use of full stop, question mark, exclamation mark, apostrophe and quotation marks in my last video, students, and today I'm going to start with exercise 1 given on page number 102, and that is insert punctuation marks, insert punctuation marks wherever required. Insert punctuation marks wherever required. Now, the first sentence is children stop talking. Fine. This is the sentence, but this is incorrect. Now, what we need to do? We need to insert the correct punctuation mark. Fine. So, अब इसमें children stop talking में क्या करना है बेटा? Children को कहा जा रहा है children stop talking. Fine. So, यहाँ पे क्या होगा? Children के बाद कॉमा लगेगा and full stop. Fine. So, ये हो गया हमारा first वाला. Children, after children, comma for a short pause and then stop talking and then full stop. So all of you please put a comma after children and at the end full stop. Please do it fast, students. Children, comma, stop talking, full stop. Then the second one, Raju, why are you late? ठीक है, अब इसमें हमें पंचुएट करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे? As said that जब भी कोई नेम आता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा. ठीक है ना. राजू से पूछा जा रहा है, राजू देन कॉमा, व्हाई आर यू लेट? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, समबडी इज आस्किंग समथिंग, तो आफ्टर लेट वी पुट अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन. सो राजू कॉमा, व्हाई आर यू लेट? क्लियर? राजू कॉमा, व्हाई आर यू लेट? फाइन. First में children, comma, stop talking, then full stop. And in the second one, after Raju, comma, why are you late? And at the end, question mark. Now the third one. Aarti
Sangam, Mona, and Ashu are friends. ये आपका थर्ड सेंटेंस है, बट ये इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें कोई भी पंचुएशन मार्क्स नहीं है। तो बेटा जब बहुत सारे कोई भी आइटम्स या नेम्स एक साथ होते हैं तो हम उनको किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से। आरती कॉमा संगम कॉमा मोना, मोना के बाद नहीं आएगा क्योंकि कंजक्शन एंड लगा है। फाइन, सो आरती कॉमा संगम कॉमा मोना एंड आशु आर फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स के बाद पुट अ फुल स्टॉप। सो आरती, संगम, मोना एंड आशु आर friends. Fine, done. I hope everybody has done. Now, fourth one. Wow, wow, look at the fireworks. Look at the fireworks. फाइन, अब इसमें हमको क्या करना है बेटा? वाव इंटरजेक्शन है तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, देन लुक का एल कैपिटल हो जाएगा। सो प्लीज इंश्योर कि आप लुक का एल कैपिटल कर दे। वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, लुक का एल कैपिटल, एट दी fireworks, and after fireworks we'll put a full stop. Fine, so wow exclamation mark, wow interjection है, हमारी feelings excitement and wonder की express कर रहा है। so wow exclamation mark, look का L capital, L of look will be capital, at the fireworks, and after the fireworks put a full stop. Fine, then the fifth one. This is Mr. Kapoor's office. Fine. अब इसमें हमें क्या करना है बेटा? This is Mr. Kapoor's office. यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आएगा मिस्टर कपूर्स में, कपूर्स में। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है कि ऑफिस किसको बिलोंग करता है, ऑफिस की ओनरशिप किसकी है? मिस्टर कपूर की। तो कपूर्स में आफ्टर आर अपॉस्ट्रोफी आप लगाएंगे तो हो जाएगा कपूर्स। दिस इज मिस्टर कपूर्स ऑफिस। सो कपूर में आफ्टर आर अपॉस्ट्रोफी एंड एट द एंड विल स्टॉप। फाइन, दिस इज मिस्टर कपूर्स ऑफिस। कपूर में आफ्टर आर आपको क्या यूज करना है? साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी। फाइन, सो दिस इज मिस्टर कपूर्स ऑफिस, एट द एंड फुल स्टॉप। नाउ द सिक्स्थ वन, ऑफ कोर्स आई विल help you. Of course I will help you. So after of course है ना, after of course क्या आएगा? yes हो, no हो, however हो, है ना, of course हो, so comma, then single I is always written capital, I will help you, after you put a full stop. Clear? Of course comma I will help you, full stop. Then the seventh one, driver said, the road
blocked. Driver said the road is blocked. So क्या करना है बेटा? Now who said? Driver said. After said हमेशा comma और driver के जो exact words है the road is blocked, ये within inverted comma आएंगे. So before the open inverted comma and after block close the inverted comma. The road is blocked. This will be written within inverted commas, that is within quotation marks, and after block put a full stop. Fine. So driver said comma, open inverted comma, then the road is blocked, full stop, and close the inverted comma. So I hope everybody has written these 7 sentences with the use of correct punctuation marks so that your sentence convey the correct meaning. So let's revise. First one, children, comma, stop talking, full stop. Children के बाद comma, stop talking, full stop. Then the second one, Raju, comma, why are you late? At the end, question mark. Third, Aarti, comma, Sangam, comma, Mona and Ashu are friends. At the end, full stop. Then fourth, wow, exclamation mark, looks L will be capital. At the fireworks, at the end, full stop. Then the fifth one, this is Mr. Kapoor's office. Kapoor's में after R put apostrophe to show possession and at the end full stop. Then the sixth one, of course, comma, I will help you, full stop. Then the seventh one, driver said, comma, open inverted comma, the road is blocked, full stop and close with inverted comma. Fine. So I hope everybody has done. So now I am going to erase these 7 sentences. I hope सबने चेक कर लिया कहाँ आपको पंचुएशन मार्क्स लगाना है, पंचुएट करना है sentences को. So now I am going to erase and start with the 8th one. Yes. So अभी आपको समझ में आ रहा होगी कि पंचुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. If you do not use them correctly, they might change the meaning of the sentence. Now, the 8th sentence. I said to him, I said to him, take the shortcut. Take the short cut. Fine. अब इसमें क्या करना है बेटा? I said to him. So after him put a comma. हमेशा जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे उससे पहले कॉमा आएगा. टेक से पहले ओपन इन्वर्टेड कॉमा. So I said to him, comma, open inverted comma, take the shortcut, full stop and close the inverted comma. है ना? जब हम स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज रखते हैं तो वो विद इन इन्वर्टेड कॉमा रखते हैं. फाइन. सो आई सेड टू हिम, कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट वाला लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल, विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, टेक द शॉर्टकट, फुल स्टॉप एंड close the inverted comma. Fine. So I said to him, comma, open inverted comma, take the shortcut, full stop and close the inverted comma. I hope everyone is done. Now the 9th one. No, I don't know you. No, I don't know you. Fine. अब बेटा जब भी हम yes, no, however ये सब वर्ड्स लिखेंगे उसके बाद हमेशा कम आएगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है बेटा? That we use comma to separate expressions like no, yes,
ओ, however, of course, है ना. तो ये इसके बाद we always separate these words by a comma. तो after no put a comma, I don't know you, and at the end full stop. Students, keep in mind that we use comma after the expressions like yes, no, however, then, of course. ये जो expressions है इनके बाद हमेशा हम comma लगाते हैं. Fine. So no comma, I don't know you. यहाँ don't में भी already apostrophe का sign लगा है because ये एक contraction है. Do not का जो short form है, short form को contraction बोलते हैं. Do not का short form क्या है बेटा? Don't. So यहाँ पे भी एक apostrophe लगा हुआ है. So no comma, I don't know you. Then the 10th one. Alas, his grandpa, alas, his grandpa is no more. Fine. अब alas क्या है? Alas is an interjection. और हमने इंटरजेक्शन में पढ़ा है कि हम alas को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस ग्रीफ, है ना. जब हम अपना दुख व्यक्त करते हैं तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? alas. So alas अगर इंटरजेक्शन है, so we all know that after interjection there is an exclamation mark. Fine. So यहाँ पे alas exclamation mark, his grandpa is no more, and after more put a full stop. So this is an exclamatory sentence. Why this is an exclamatory sentence? Because in this there is an interjection and we use the interjection to express our sudden feelings and emotions. And alas expresses the feeling of grief. So alas, then exclamation mark, his grandpa is no more, at the end full stop. Fine. Now the 11th one. Where is the India Gate? Where is the India Gate? This is a question. So where is the India Gate? This is a question. So we must know that all the interrogative sentences, the questions, they end with a question mark. अगर हम interrogative sentence के end में question mark नहीं लगाएंगे तो वो sentence incorrect हो जाएगा. Fine. So where is the India Gate? इसमें gate के बाद हम क्या use करेंगे बेटा? Question mark. Fine. So after gate हमने क्या use किया है? Question mark. So where is the India Gate? Question mark. Fine. Now the 12th one. Can I wear Seema's dress? Now again this is a question, but इसमें possession भी, ownership भी समझ में आ रही है. apostrophe का sign भी होगा. We use apostrophe to denote ownership or possession. So can I wear Seema's dress? अब ये Seema's है ना. That means कि इसमें possession दिखाने के लिए हमें क्या use करना है? We need to use the sign of apostrophe. So Seema, after A we'll put sign of apostrophe, then S, and can I wear Seema's dress? We are asking a question. हम किसी से question पूछ रहे हैं, so हम permission मांग रहे हैं. Asking a question, we are seeking permission. So this is a question. So this is an interrogative sentence. So at the end we'll put a question mark. है ना? So can I wear Seema's dress? Question mark. Seema में क्या है बेटा? Sign of apostrophe to show possession. Fine.
So can I wear Seema's dress? Seema में apostrophe and at the end question mark. Now the 13th one. Rajni, please draw the curtains. Rajni, please draw the curtains. Now, Rajni, कोई भी नेम है तो उसके बाद हमें क्या लगाना है? कॉमा. So after Rajni, we put a comma. So Rajni, please draw the curtains at the end. Full stop. Clear? So Rajni, comma, please draw the curtains. Then the 14th one. Do you write? Do you write neatly? Do you write neatly? After neatly, put a question mark because this is an interrogative sentence. So all the interrogative sentence the end with a question mark. So do you write neatly at the end? Question mark. Fine. Now let's revise these sentences, students, once again, and then I'll erase the board and write the remaining sentences. The 8th one. I said to him, after him, put a comma. Open inverted comma. Always remember, before we open the inverted comma, we need to put a comma. Open inverted comma, takes T will be capital, take the shortcut, full stop, close the inverted comma. जब हम स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज रखते हैं तो वो विद इन इन्वर्टेड कॉमा रखते हैं और ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट होते हैं. अभी आप वो सीनियर क्लासेस में सीखोगे. फाइन. देन द 9th वन. नो आई डोंट नो यू. तो जब भी हम एक्सप्रेशंस नो, यस, ओ, हाउएवर ये सब यूज करते हैं तो हम हमेशा उसके बाद कॉमा लगाते हैं ना. नो, यस, हाउएवर ये सारे एक्सप्रेशंस के बाद हम कॉमा लगाते हैं. सो नो कॉमा, आई डोंट नो यू, फुल स्टॉप. डोंट, ऑलरेडी देयर इज एन अपॉस्ट्रोफी टू डिनोट द शॉर्ट फॉर्म contraction. Fine. Then the 10th one. Alas, his grandpa is no more. Alas interjection है, इसलिए आफ्टर दिस वर्ड alas हमने क्या यूज किया है? एक्सक्लेमेशन मार्क. His grandpa is no more, है ना. ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बिकॉज अलास इंटरजेक्शन है जो हमारा ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा है. सो अलास एक्सक्लेमेशन मार्क. His grandpa is no more, full stop. Then the 11th one. Where is the India Gate? This is an interrogative sentence. Question है. So keep in mind कि बिना question mark के interrogative sentences incorrect. So where is the India Gate? Question mark. Then the 12th one. Can I wear Seema's dress? This is again a question. So at the end question mark and Seema's dress है ना. यहाँ पे apostrophe का यूज होगा सीमा में आफ्टर ए एंड बिफोर एस टू शो पोजेशन, टू शो ओनरशिप की किसकी ड्रेस है वो? सीमा की ड्रेस. एंड आई एम सीकिंग परमिशन. फाइन. देन द 13th वन. रजनी, बेटा कभी भी हम कोई नेम यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसके बाद हमेशा कॉमा लगाते हैं. तो यहाँ पे रजनी के बाद इट्स अ नेम, वी पुट अ कॉमा. प्लीज ड्रॉ द कर्टन्स, फुल स्टॉप. Then the 14th one. Do you write neatly? This is again a question. So you need to put a question mark at the end. So now students, I'm going to erase these sentences and write the 15th one. Now the 15th sentence. The 15th sentence. Have you seen the latest
episodes have you seen the latest episodes of Art Attack? Now, have you seen the latest episodes of Art Attack? This is an interrogative sentence. So, इसके एंड में हमें कुछ नहीं करना है. क्या करना है? क्वेश्चन मार्क यूज करना है. Fine. So, at the end, please put a question mark. Have you seen the latest episodes of Art Attack? Fine. I hope everybody has written. So, have you seen the latest episodes of Art Attack? Now, the 16th one. Nitin, where is my cardboard? Nitin, where is my cardboard? So, Nitin एक नेम है, इसीलिए नेम ऑफ अ पर्सन हम हमेशा कॉमा लगाएंगे. Nitin, where is my cardboard? Again, this is a question, so we will put a question mark at the end. है ना? बेटा हमेशा याद रखना, सेंटेंस में जब हम किसी का भी नाम लिखते हैं तो we always put a comma, है ना? नितिन, है ना? हम उसको एड्रेस करके भी आस्किंग समथिंग, तो बोलने के बाद पॉज देना है तो हम क्या यूज करेंगे? कॉमा. सो नितिन, कॉमा, वेयर इज माय cardboard? And this is a question. So at the end, question mark. Now the 17th sentence. Jia said, my mother, Jia said, my mother is a doctor. Fine. अब यहाँ पे जिया सेड, जिया ने क्या बोला? जिया सेड. सो हमेशा जब भी हम किसी भी स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज लिखते हैं तो वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लगते हैं. और इन्वर्टेड कॉमा के पहले हमेशा क्या आता है बेटा? कॉमा. सो जिया सेड, देन आफ्टर दिस ओपन इन्वर्टेड कॉमा, माय मदर इज अ डॉक्टर. यहाँ स्टेटमेंट स्पीकर का खत्म हुआ तो फुल स्टॉप एंड क्लोज विद इन्वर्टेड कॉमा. क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले आपका कॉमा आता है. सो जिया सेड कॉमा, open inverted comma, my mother is a doctor. Fine. Now, the last sentence of this exercise is Sapna's way of talking. Sapna's way of talking is very impressive. Sapna's way of talking is very impressive. Fine. अब यहाँ पे Sapna's है ना? किसका way of talking? We are talking about Sapna's. So Sapna's में apostrophe after a. Sapna's way of talking is very impressive. And at the end, full stop. Fine. So Sapna's way of talking is very impressive. Full stop. Sapna's में क्या लगाया? Apostrophe s. Fine. Apostrophe का sign. So with this, students, we have finished exercise 1 of punctuation. Fine. Now, and I'm sure अभी आपको समझ में आया
Why punctuations are important? Because if we miss any punctuation, it may change the meaning of the sentence. That's all for today, students. I'll be continuing the remaining exercise of this unit in my next video. Thank you, students. Have a good day ahead.